खिलाफत है इन्नामे आसमानी. It has been another exceptional week on Huzoor's tour of Europe, by the grace of Allah. MTN News were honoured to report extensively on Jalsa Salana, France. Then we went live from Huzoor's historic address to UNESCO, where our beloved Khalifa beautifully defended and explained the true, peaceful teachings of Islam. Yet another moment of blessed progress for Islam in France came with the inauguration of the new Mahdi Mosque in Strasbourg. Behind the scenes, Huzoor's schedule was just as packed as he met numerous dignitaries and presided over Waqfe Nau classes, nikah announcements and Ameen ceremonies. Now, join the MT International team as we humbly take you behind the scenes for a glimpse at just some of Huzoor's activities and meetings over the last week. As in the Netherlands the week before, Huzoor graciously presided over classes with Waqfe Nau girls and then Waqfe Nau boys in France on Monday. In the Waqfe Nau girls class, one person asked about marriages between different cultures and races. अहमदियों की तो शादियां अहमदियों में होनी चाहिए हैं. बाकी रह गया ये सवाल कि दूसरी कौमें हैं, मसलन अरब हैं, मोरक्कन है, अल्जेरियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, फार ईस्टर्न है, पाकिस्तानी है, ये आपस में कर सकते हैं कि नहीं. जहाँ जहाँ रहते हो अगर अच्छा रिश्ता मिलता है, अहमदी हो और अच्छा रिश्ता हो तो करनी चाहिए. बड़ी अच्छी बात है. अब क्योंकि दुनियादारी में लोग पड़े हुए हैं, दीन का पता कोई नहीं, इसलिए कल्चर बेशक मुख्तलिफ हों, तो अगर दीन एक है, मुसलमान अहमदी हैं, तो लड़कियां कोई अच्छा रिश्ता कोई मिलता है दुआ करके वहाँ कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है. ये पूछ रही हैं कि आप क्या हमें बता सकते हैं अपना कोई ऐसा ख्वाब जो आपको याद रहा हो, बहुत कोई दिलचस्प ख्वाब जो आपको याद रहा हो, आपके जहन में रहा हो? ख्वाब याद रहा हो, बहुत पुराना ख्वाब. एक तो मैंने देखा था जब मैं इम्तिहानों में दे रहा था, उस वक़्त अल्लाह ताला ने उसको मुझे एक ख्वाब में दिखाया कि मुस्लिम का इल्हाम है ना, यंसुर का रिजाल ही मेरे सवा, वो मुझे भी अल्लाह ताला ने बताया. और उसके बाद सालों से लेके अब तक अल्लाह ताला मदद करता रहता है उसके हिसाब से. Later, a class was held with Waqfe Nau boys. Monday also saw Huzoor lead nikah ceremonies and hold dignitary meetings with external guests, including a governor and a mayor. Je pense que le message de paix que porte sa sainteté sera particulièrement apprécié par les différents représentants des pays qui siègent à l'ONU et qui représentent toute la communauté internationale. En tout cas, écoutez, d'abord, moi personnellement, j'ai été très honoré de la présence du calife à Saint-Prix. C'est une marque d'honneur portée à notre commune, à notre petite commune de Saint-Prix. Ça m'a permis de lui dire notre satisfaction du travail que nous menons ensemble sur tout un tas de sujets dans notre ville, localement. These activities took place at the Mahdi Mosque in Saint-Prix, where Huzoor had arrived following the Jalsa Salana. The following day saw Huzoor delivered the keynote's address at an historic reception held at UNESCO, Paris. The event also saw meetings with a number of dignitaries. Finally, after suffering years of relentless persecution, they migrated to the city of Medina, where the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing upon him, formed a covenant of peace between the Muslim migrants, the Jewish people, and other members of society. According to its terms, the divergent groups pledged to live peacefully, to fulfill the rights of one another,
and to foster a spirit of mutual sympathy, tolerance, and cooperation. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, was elected as the head of the state, and under his leadership, the covenant proved to be a magnificent charter of human rights and governance, and it ensured peace between the different communities. With the grace of Allah, the very first Muslim Nobel laureate was an Ahmadi Muslim, Professor Dr. Abdul Salam, an eminent physicist who was the Nobel Prize, who won the Nobel Prize for Physics in 1979. Throughout his life, Professor Salam spoke of how Islam and the Holy Quran in particular was the inspiration and guiding light behind his work. In fact, he used to say that there were around 750 verses in the Holy Quran directly related to science and which enhanced our understanding of nature and the universe. It was a great pleasure and a great honor to be invited here tonight at UNESCO and meet His Holiness, the leader of your community, and hear his speech, especially his speech about education and inclusive education, education of young girls around the world, and also the promotion of scientific education, which, as a scientist myself, is something that is very dear to me. C'est un bonheur immense, c'est un homme extraordinaire, avec vraiment un homme qui a un esprit brillant, un homme épris de paix. C'est dont toute la communauté musulmane a besoin, cet esprit de paix, c'est-à-dire le monde a besoin de ça, pour vivre ensemble dans un pays où il n'y a que la paix qui règne. I came to attend the conference of the Caliph of the Ahmadiyya, and I was very interested in what he said during his speech, especially about education for girls and women. He talked a lot about respect, about solidarity, also between communities. He talked about the projects he had, the community had in Mali, for example, and so these words sounds to me because when we talk about Islam generally in France or in other countries, we talk about Islam in a way to stigmatize this religion and in a context of huge Islamophobia. So it was important to hear other words about Muslim community. The week ends with the Friday sermon, which saw the inauguration of a new mosque in Strasbourg. जो इनका नक्शा था, प्लान था, उसकी तामीर के सिलसिले में इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आर्किटेक्ट ने 1 मिलियन यूरो का अंदाज़ा दिया था और उसको भी मजलिस खुदाम अहमदिया फ्रांस ने पूरा करने का वादा किया और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये मस्जिद 5,30,000 यूरो में मुकम्मल हो गई। अब तक खुदाम अहमदिया की तरफ से 3.5 लाख यूरो मिले हैं, बाकी जमात ने अदा किए हैं और खुदाम अहमदिया कहती है कि हम बाकी भी अदा कर देंगे, लेकिन खुदाम अहमदिया ने तो अदा कर दिए और पूरा कर भी दें शायद इंशाअल्लाह ताला, शायद क्या इंशाअल्लाह ताला कर देंगे, लेकिन बाकी जमात क्यों महरूम रह रही है इससे? अगर ये मस्जिद अब बन गई है तो लजना और अंसार को चाहिए कि एक मस्जिद की तामीर की ज़िम्मेदारी वो लें, दोनों मिल के लें और अगले 3 सालों के अंदर एक और मस्जिद यहाँ बनानी चाहिए जो अंसार और लजना को मिलकर बनानी चाहिए। 250 अफराद के नमाज़ पढ़ने की जगह है जो कौंसिल ने अपनी कैलकुलेशन की उसके मुताबिक, और 50 गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह है, एक जमाती दफ्तर है, लजना का दफ्तर भी है, मर्द और ख़वातीन के लिए लाइब्रेरी भी है और इस तरह गुसलखाने वगैरह भी हैं, काफ़ी बड़ा कवर्ड पार्किंग हॉल है और अगर कभी एमरजेंसी ज़रूरत हो तो उसमें भी 125 अफराद आ सकते हैं। अल्लाह ताला हर लिहाज से मुबारक फरमाए और
ان خدام کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں قربانی دی ہے، اور پھر صرف مسجد کی مالی قربانی نہیں، اس کی مسجد کی آبادی کی روح کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خدام کے عبادت کے معیار بھی بلند ہوں اور جماعت کے افراد کے معیار بھی بلند ہوتے چلے جائیں۔